Now today we will start with revision. So you need to refer to section 115 of Civil Procedure Code. It says that the High Court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to such High Court and in which no appeal lies thereto. Very important. Revision तब lie करता है जब appeal नहीं lie करती. ठीक है? And if such subordinate court appears to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, or to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or to have acted in exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity, the High Court may make such order in the case as it thinks fit. तो यहाँ पे important keywords क्या हैं? Case decided और in which no appeal lies. ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको क्लियर रहना होगा. उसके बाद ABC को लेके भी आपको क्लियर रहना होगा. इसको in a nutshell you can simply say that revision is just confined to jurisdictional questions. ठीक है, अब देखिए एक clause A में jurisdiction not vested in by law, clause B में failed to exercise jurisdiction which the court actually has, clause C में क्या है, where it has exercises jurisdiction illegally or with material irregularity. तो तीनों ही situation में there is a question of jurisdiction. ठीक है, so this is important for you. Now the proviso says that provided that the High Court shall not under this section vary or reverse any order made or any order deciding the issue in course of a suit or other proceeding except where the order, if it had been made in favor of the party applying for revision, would have finally disposed of the suit or other proceedings. Then it further reads that the High Court shall not under this section vary or reverse any decree or order against which an appeal lies either to the High Court और टू एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट देयरटो. देखिए फिर वही स्टेटमेंट रिटरेट हो गया कि अपील नहीं लाई करनी चाहिए. अपील शुडंट लाई, ठीक है, आइदर टू द हाई कोर्ट और टू द सबॉर्डिनेट कोर्ट. फाइनली इट सेज a revision shall not operate as a stay of suit or other proceeding before the court except where such suit or other proceeding is stayed by the high court. मतलब रिवीजन के लिए मेरे लिए आपने फाइल कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट पे जो प्रोसीडिंग चलनी है वो स्टे हो जाएंगी. ठीक है, explanation reads in this section expression any case which has been decided includes any order made or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceeding. अब पहले तो हम इस बात की बात करते हैं कि what is the object of section 115. See, the object of section 115 is to prevent the subordinate courts from acting arbitrarily, capriciously and illegally or with material irregularity in exercise of their jurisdiction. It clothes the High Court with the power to see the proceedings of the subordinate court are conducted in accordance with law within the bounds of their jurisdiction and in furtherance of justice. It primarily enables the High Court to correct, when necessary, errors of jurisdiction committed by subordinate courts and provides the means to an agreed party to obtain a rectification of a non-appealable order. अब ऐसी revisional powers are akin to the powers of superintendence that the High Court has over all the subordinate courts. अब देखिए ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट के जज को लगे कि देखिए इस केस में तो अपील हो नहीं सकती, तो अपील नहीं हो सकती तो मैं जो चाहे करूं इस केस में, तो मैटर ऊपर तक नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैटर अपील पे जाता तो अपीलेट कोर्ट वुड हैव द ओकेजन टू एग्जामिन द मैटर्स इन रिवीजन, फिर उसको देखता और अगर वो पाता कि यह मैटर ढंग से नहीं डिसाइडेड है देन इट वुड सेट असाइड द जजमेंट. लेकिन मान लीजिए अ जज थिंक्स दैट सिंस नो अपील लाइज then I can indulge into anything and there would be no consequence, then in that occasion the concerned judge would be very wrong, because the law has already provided a remedy for this situation where a judge is acting illegally or is not acting within the bounds of his jurisdiction, and the remedy is called revision. Now you need to focus on this aspect that revision is only confined to the jurisdictional questions. अब इस पे जो सबसे leading case है
वो है मेजर एस खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर F.J. ढिल्लन, डिसाइडेड ऑन 14 अगस्त 1963. इसमें the Honorable Supreme Court held, and I quote, that the High Court was right in setting aside the order passed by the trial judge and in holding that without investigation as to respective claims made by the parties by their pleadings on the matter in dispute, the suit could not be held as not maintainable. The decision of the trial judge affected the rights and obligation of the parties directly. It was a decision on an issue relating to jurisdiction of the court to entertain the suit filed by respondent. The decision clearly attracted Clause C of Section 115 of CPC. Supreme Court continued, speaking through Justice Sarkar and Justice Shah. Supreme Court said that the expression case is a word of comprehensive import. It includes civil proceedings other than the suits and is not restricted by anything contained in Section 115 to the entirety of the proceedings in a civil court. To interpret this expression case as an entire proceeding only and not as a part of proceeding would be to impose an unwarranted restriction on the exercise of powers of superintendence and may result in certain cases in denying relief to the aggrieved litigant where it is most needed and may result in perpetration of gross injustice. The High Court is not obliged to exercise its jurisdiction when a case is decided by a subordinate court and the conditions in Clause A, B, C of Section 115 are satisfied. The exercise of the jurisdiction is discretionary and the High Court is not bound to interfere merely because the conditions are satisfied. The interlocutory character of the order, the existence of another remedy to the agreed party by way of appeal from the ultimate order or decree in the proceeding or by the suit, and the general equities of the case being served by the order made are all the matters to be taken into account in considering whether the High Court, even in cases where the conditions which attract the jurisdiction exist, should exercise its jurisdiction. So basically Supreme Court is telling you through this judgment कि पहली चीज केस डिसाइडेड का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा सूट डिसाइड हो जाना चाहिए तभी हम रिवीजन एंटरटेन कर सकते हैं. नो, केस डिसाइडेड होने का मतलब है कि कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो एक बार प्रॉपरली डिसाइड हो गई है और उससे अगर अपील लाई नहीं करती और कंडीशन सेक्शन 115 की सेटिस्फाई हो गई हैं, देन द हाई कोर्ट मे एक्सरसाइज दिस रिविजनल पावर्स. ठीक है. सेकेंडली इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो रेमेडी ऑफ रिवीजन है डिस्क्रिशनरी है. इट डजंट मैंडेट द हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज दिस रिविजनल पावर इन ऑल केसेस. तो वहां पे डिस्क्रिशनरी रेमेडी होने के कारण कोर्ट जो अपना डिस्क्रिशन है वो जुडिशियसली एक्सरसाइज करेगा. इसके लिए वो ये चीज़ें देखेगा कि ऑर्डर किस नेचर का है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है या फाइनल ऑर्डर है, क्या पार्टी के पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, क्या अग्रीड पार्टी अपील फाइल कर सकती है, और जनरल इक्विटीज ऑफ द केस क्या है. ठीक है. इक्विटेबल प्रिंसिपल्स भी देखता है. एंड फाइनली इट कैन कम टू अ कंक्लूजन. Merely because the conditions of Section 115 are satisfied, the High Court is not bound to exercise its jurisdiction. ये एक छोटा सा पॉइंट था कि High Court is not bound. ठीक है. वो बाध्य नहीं है ये jurisdiction एक्सरसाइज करने के लिए. Discretionary remedy है. Then the Supreme Court continues further. It said that under Order 14 Rule 2, where the issues of both law and fact arise in the same suit, and the court is of the opinion that the case or part thereof could be disposed of on the issues of law only, it shall try those issues first, and for that purpose may, if it thinks fit, postpone the settlement of issues of fact until after issues of law has been determined. The jurisdiction to try the issues of law apart from the issues of fact may arise and be exercised only where, in the opinion of the court, the whole suit may be disposed of on the issue of law alone. But CPC confers no jurisdiction upon the court to try a suit on mixed issues of law and fact as preliminary issues. Normally, all issues in the suit should be tried by the court
not to do so, especially when the decision on on the issues even of law depends upon issues of fact, would result in a lopsided trial of the suit. Now, Supreme Court speaks through Justice Hidayatullah, and the Honorable Supreme Court mentions and says that the decision of the subordinate court is amenable to revisional jurisdiction of the High Court unless that jurisdiction is clearly barred by a special law or an appeal lies from the judgment. The expression in which no appeal lies does not speak of appeal under CPC. The expression is a general one. This is important. The expression is a general one and applies to every decision of a court subordinate to High Court in which no appeal lies, whether under CPC or otherwise. The decision of the trial judge was erroneous because he denied himself the jurisdiction of holding that the suits were not maintainable. The fact that he did not dismiss the suit and did not draw up decrees for that purpose was itself an exercise of jurisdiction with material irregularity, if not also illegality. Insofar as the parties were concerned, the suits were no longer live suits as the decision has put an end to them. The word case in section 115 does not mean a concluded suit or proceeding, but each decision which terminates a part of the controversy involving a matter of jurisdiction. Where no question of jurisdiction is involved, the court's decision cannot be impugned का मतलब challenged, under section 115 because the court has jurisdiction to decide wrongly as well as rightly. तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा आसानी से बता दिया. उन्होंने सीधे बोल दिया कि केस का मतलब कंक्लूडेड सूट नहीं होता और या प्रोसीडिंग, बट हर वो डिसीजन विच टर्मिनेट्स अ पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग मैटर ऑफ जुरिसडिक्शन वुड बी कवर्ड विद इन द एक्सप्रेशन केस डिसाइडेड. नाउ टू गिव यू सम इलस्ट्रेशन दैट under what situations the High Court will interfere in the case where the subordinate court exercises jurisdiction not vested in it by law. तो पहला, where the lower court assumes jurisdiction which it does not possess on account of pecuniary or territorial limits or by the reason of subject matter of the suit, or entertains an appeal from an order which is not appealable, or entertains a suit or appeal which it has no jurisdiction to entertain, or makes an order which it has no jurisdiction to pass, or grants an injunction without considering whether a prima facie case has been made out, or allows withdrawal of the suit on the ground not contemplated under Order 23 Rule 1, or directs a subordinate court to try a suit which is not triable by that subordinate court. Okay? So these can be the situation where the subordinate courts has exercised a jurisdiction not vested in them by law. Now to give you the illustration of failure to exercise jurisdiction. What can be the failure to exercise jurisdiction? To give you an illustrative list likewise, failure to exercise jurisdiction would be in the following situations. First, refusal by the court to summon the deponent of an affidavit for cross-examination, or failure of the executing court to construe the decree, or failure on the part of the court in considering the principles for the grant of ad interim injunction and refusing to grant it, or refusal to entertain or rejection of a plaint, application or memorandum of appeal or review application on erroneous view that it has no jurisdiction to entertain it, or rejection of a counterclaim on the ground that the original suit is dismissed for default, or refusal to make a reference under Order 46 Rule 7, or an erroneous interpretation of the statutory provisions as obligatory instead of directory. Okay? So these can be the situations where the courts have not exercised the jurisdiction which the law has vested in them. अब फाइनली आते हैं क्लॉज सी पे. अब इसमें लिखा है एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी. तो इसका क्या मतलब है? इसके लिए जो सबसे अच्छा केस है जो मैं आपको बता सकता हूँ वो है DLF हाउसिंग कंस्ट्रक्शन वर्सेस स्वरूप सिंह, डिसाइडेड ऑन 12 सितंबर 1969.
Here, the Honorable Supreme Court said that the position thus seems to be firmly established that while exercising the jurisdiction under Section 115, it is not competent to the High Court to correct errors of fact, however gross, or even gross errors of law, unless the said errors have relation to jurisdiction of the court to try the dispute itself. फोकस करिए इस लाइन पे. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ग्रोस एरर्स ऑफ फैक्ट आप डिसाइड नहीं कर सकते रिविजनल जुरिस्डिक्शन में, ना ही आप एरर्स ऑफ लॉ डिसाइड कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल दोज एरर्स हैव अ रिलेशन टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रिविजनल मैटर्स आर कन्फाइंड टू द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन ओनली. Honorable Supreme Court continues and said that clause A and clause B of this section on their plain reading quite clearly do not cover the present case and was not contended, as indeed it was not possible to contend that the learned additional district judge has had either exercised the jurisdiction not vested in him by law or has failed to exercise the jurisdiction so vested in him in recording the order that the proceeding and the reference be stayed till the decision of the appeal by the High Court in proceedings for specific performance of the agreement in question. Clause C also does not seem to apply to the case in the hand. The words illegally and with material irregularity as they are used in this clause do not cover either error of fact or of law. They do not refer to the decisions arrived at but merely to the manner in which is reached. ये important है, ये आपके एग्जाम में लिखना होगा. The words illegally and with material irregularity as used in this clause do not cover either errors of fact or of law. They do not refer to the decision arrived at but merely to the manner in which it is reached. The errors completed by this clause may, in our view, relate either to the breach of some provision of law or to material defects of procedure affecting the ultimate decision and not to errors either of fact or law after the prescribed formalities have been complied with. समझ रहे हैं? तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी एप्ट. दैट इज़ व्हाई आई कॉल दैट दिस इज़ द बेस्ट केस ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि इन्होंने बड़े ससेंटली बता दिया है कि द वर्ड्स इलीगली और जो मटेरियल इरेगुलरिटी आ रहे हैं क्लॉज सी में, ये एरर्स ऑफ लॉ एंड फैक्ट से रिलेट नहीं करते हैं. ये एक्चुअली रेफर करते हैं कि आप किसी डिसीजन पे पहुंचे कैसे. ठीक है. The errors contemplated by this clause relate either to some breach of provision of some law or to material defects of procedure affecting the ultimate decision. अगर आपका प्रोसीजर ही materially defective था जिसके बेसिस पे आपका ultimate decision आया, तो ये उन errors पे अप्लाई करता है. ठीक है. ये क्या कहते हैं, ये errors of law या errors of fact पे तो अप्लाई करता ही नहीं है. ठीक है. errors of fact की तो फिर बात ही नहीं हो सकती अंडर सेक्शन 115. ठीक है. तो इन बातों पे ध्यान दीजिएगा. द वर्ड्स illegally and with material irregularity as used in this clause do not cover either errors of fact or of law. They do not refer to the decision arrived at but merely to the manner in which such decision is reached. ठीक है. The errors contemplated by this clause, that is clause C of section 115, in the view of the Supreme Court relate either to the breach of some provision of law or to material defects of procedure affecting the ultimate decision and not to the errors of fact or of law after the prescribed formalities have been complied with. अब इसके illustration क्या क्या हो सकते हैं. illustration ये हो सकता है कि where the subordinate court decided a case without considering evidence on record or decides on evidence not legally taken or which is otherwise irrelevant or inadmissible, or decides a case without recording reasons for its judgment, or does not apply its mind to the facts and circumstances of the case, or fails to follow a decision of the High Court to which it is subordinate, or follows a decision which does not apply to the facts of the case. ठीक है. मतलब ऐसे डिसीजन का प्रेसिडेंट अप्लाई कर देते हैं जो उस केस के फैक्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा था, और
decides a case in absence of the party or without giving an opportunity of being heard to the party whose rights are adversely affected by such decision, or frames an issue wrongly and then places the burden of proof on such party. Issue गलत frame किया है और wrongly place the burden of proof on such party, or orders the execution of a decree which is not executable, or orders attachment before judgment in absence of any material to support such an order, or without following the procedure under Order 38, or grants or refuses to grant temporary injunction without considering and applying the provision and principles of Order 39, or confirms an execution of sale under Order 21 Rule 92 without disposing of the application to set aside the sale under Order 21 Rule 90, or passes a decree on compromise by the guardian ad litem without inquiring whether it was for the benefit of minor or not, or proceeds with the latter suit ignoring the provisions of section 10 of the CPC, मतलब सब judice के violation में proceed कर जाते हैं, or consolidates two suits for hearing without consent of the parties even though the parties are not common and the issues are also different, or omits to draw up a decree in accordance with judgment, or orders for the appearance of a parda nashin lady in public, or erroneously shuts out the evidence of the party, or does not consider condonation of delay under section 5 of Limitation Act, or remands a case after framing the issues which do not arise in the case, or admits additional evidence in appeal without considering the provisions of Order 41 Rule 27 of CPC, or acts in violation of section 113 of CPC by holding an act of parliament to be ultra vires. Section 113 is reference, or accepts a plaint without court fee, or makes an order ignoring an earlier order passed by the court, or grants a relief not prayed for by the parties. These can be the illustration of clause C. अब कुछ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि रिवीजन अपील और रिवीजन और आपके सेकंड अपील में क्या डिफरेंस है, रिवीजन और पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस में क्या अंतर है. अब देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेमेडीज़ हैं दे आर मच वाइडर. आर्टिकल 226 और 227 में जो रेमेडीज़ हैं, रिट रेमेडीज़, दे आर मच वाइडर इन नेचर. रिवीजन कुछ मिलता जुलता है बट इट इज़ नॉट एज वाइड. ठीक है, तो पहली बात, रिवीजन की पावर काफ़ी कुछ सिमिलर लगती है विद द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस. हाउएवर दे आर बोथ डिस्टिंक्ट, अलग अलग होती हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये दिखने में लगती है लाइक द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस बट इन एक्चुअलिटी इट इज़ नॉट. ये देखिए, जो सुपरिटेंडेंस की जो पावर है हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और जुडिशियल भी है. ठीक है, इट इज़ बोथ जुडिशियल एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. बट रिविजनल पावर इज अ स्टैट्यूटरी पावर. ये पावर स्टैट्यूट से मिलती है और स्टैट्यूट ने अगर वो पावर दी है तो वो पावर ले भी सकती है. ठीक है, पर सुपरिटेंडेंस की पावर कैसी है? सुपरिटेंडेंस की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है और किसी भी स्टैट्यूट से वापस नहीं ली जा सकती. ठीक, दूसरी चीज़, एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो रिविजनल पावर है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 115 ऑन द क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन अलोन. जब तक सेक्शन 115 के ग्राउंड्स फुलफिल नहीं होंगे तब तक यू कैन नॉट एंटरटेन अ रिविजन. हाउएवर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई करती इन सुपरवाइजरी पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये तो डिफरेंस की बात हो गई. अब एक चीज़ याद रखिएगा कि एक बार आपने रिविजनल जुरिसडिक्शन को इन्वोक कर लिया, ठीक है, और एग्जॉस्ट कर लिया, तो उसके बाद उसी पॉइंट पे आप सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन एंटरटेन नहीं कर सकते. याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ऐसा इसलिए प्रोहिबिट कर देता है बिकॉज इट वांट्स टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है, एंड ऑल्सो टू रिस्पेक्ट एंड अकॉर्ड फाइनलिटी टू इट्स ओन डिसीजंस. तो if you choose either of the two remedies on the same point, then you cannot choose the other after exhausting one.
ठीक है, ये याद रखिएगा. देयर आर डिसीजंस टू दैट इफेक्ट. इन फैक्ट द डिसीजन इज शंकर रामचंद्र अभयंकर वर्सेस कृष्णाजी दत्तात्रेय बापत, रिपोर्टेड इन AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1. खैर उतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, पर मैंने बता दिया. अब एकेडमिक्स लेवल के लिए ये अपील और रिवीजन में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं. तो अपील और रिवीजन में क्या डिफरेंस है? An appeal lies to a superior court, which may not necessarily be a high court, while a revision application under CPC lies only to the high court. अब स्टेट अमेंडमेंट्स हैं जिन्होंने कुछ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को भी एम्पावर कर दिया है, बट हम लोग सेंट्रल एक्ट के प्योरिटन होके बात कर रहे हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा, रिविजन एप्लीकेशन अंडर CPC प्राइमरली लाइज टू द हाई कोर्ट. आप प्राइमरली भी हटा दीजिए, आप सीधे बोलिए ओनली लाइज टू द हाई कोर्ट. स्टेट अमेंडमेंट्स को अकाउंट में मत लीजिएगा जब तक उस स्टेट को लेके स्पेसिफिकली बात ना हो रही हो. Secondly, appeal lies only from the decree and appealable orders, but a revision application lies from any decision of the court subordinate to the High Court from which no appeal lies, be it either first appeal or second appeal or an appeal from an order. ठीक है, and your revision power is exercised by the High Court. ठीक. Third is, a right of an appeal is a substantive right conferred by the statute, while revisional power is also conferred by the statute, but exercise of that power is purely discretionary in nature. ये discretionary है. Right of an appeal एक बार grant हो गया आपको तो फिर वो आपका right बन जाता है, but there is no such thing as a right to revision. ठीक है, वहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है. Then appeal abates if the legal representative of a deceased party are not brought on record within the prescribed period. A revision application, however, does not abate in such cases. The High Court may at any time bring the proper parties on the record of the case. Then the grounds for an appeal and revision application are also different. A revision application lies only on the ground of jurisdictional error, while an appeal lies on the question of fact and law or of a mixed question of fact and law. Finally, filing of an application is not necessary in the case of revision. An aggrieved party may invoke the jurisdiction of the High Court by filing an application, or the High Court may exercise the revisional jurisdiction even suo motu, that is, by its own motion. In case of an appeal, on the other hand, the memorandum of appeal must be filed before the appellate court by the aggrieved party. There is no such thing as suo motu appeal, yaad rakhiyega. Then the difference between your second appeal and revision. See, a second appeal lies to the High Court on the ground of substantial question of law, while a revision application lies on the ground of jurisdictional error. Then, revisional powers of the High Court can be invoked only in those cases in which no appeal, either first appeal or second appeal or appeal from an order, lies to the High Court or to any subordinate court. The second appeal lies only in High Court under Section 100 of CPC. Then, while exercising revisional jurisdiction, High Court cannot interfere with an order passed by the subordinate court if it is within its jurisdiction, even if it is legally wrong. अगर उसके jurisdiction में है और वो material irregularity or illegality से नहीं है, then the High Court cannot interfere with that under revisional jurisdiction. The High Court, on the other hand, can interfere with a decree passed by the lower appellate court if it is contrary to law. ठीक है, और सेकेंड अपील के मैटर पे तो उसका जुरिस्डिक्शन अगर उसके पास चला गया तो उस पार्ट पे भी खुल जाता है. देन हाई कोर्ट कैन नॉट डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज रिविजनल जुरिस्डिक्शन, while it can decide a question of fact in second appeal in certain limited circumstances. ठीक है, कभी कभी सर्टेन लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी डिसाइड कर सकता है, जैसे 103 के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था. देन हाई कोर्ट may decline to interfere in revision if it is satisfied that the substantial justice has been done. In second appeal, however, High Court has no discretionary power and it cannot refuse to grant relief merely on equitable grounds. ठीक है, क्योंकि सेकेंड अपील एक बार एडमिट हो गई, ग्राउंड सेटिस्फाई हो गए, तो फिर वो अगेन पार्टी का राइट बन जाता है. इट इज़ नॉट अ रिविजन. अब रिविजन और रेफरेंस में क्या अंतर होता है? देखिए, इन अ रेफरेंस दैट इज अंडर सेक्शन 113 read with order 46, the case is referred to the high court by a court subordinate to it. वहाँ पे एक लोअर कोर्ट सुपीरियर हाई कोर्ट को मैटर भेजता है क्योंकि उसके ओपिनियन में कोई एक्ट, ऑर्डिनेंस एसेट्रा, स्टैट्यूटरी प्रोविजन
is violative of the constitution, और वो हाई कोर्ट को रेफरेंस भेजता है तो हाई कोर्ट में डिसाइड द मैटर इन वन वे और दी अदर, ठीक है. लेकिन रिवीजन के केस में jurisdiction of the high court is invoked by the agreed party or by high court suo moto. या तो हाई कोर्ट खुद ही अपना jurisdiction इन्वोक करता है रिवीजन का, या अग्रीड पार्टी उसके पास पहुंचती है. रेफरेंस सिर्फ कोर्ट करता है, लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट ही रेफरेंस करता है. देखिए ऑब्वियसली उसके पास तो पावर है नहीं टू स्ट्राइक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. ये पावर तो आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही अवेलेबल है ना. दैट इज वाई रेफरेंस इज सेंट टू द हाई कोर्ट. ठीक है. सेकेंड डिफरेंस क्या है? द ग्राउंड्स ऑफ रेफरेंस रिलेट टू रीजनेबल डाउट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, while the grounds of revision relate to jurisdictional errors of the subordinate court. अब review और revision में क्या difference है? See, revisional jurisdiction can only be exercised by the High Court, while the power of review can be exercised by the very court which passed the decree or made the order. Then revisional power can be exercised by the High Court only in a case where no appeal lies to the High Court, but review can be made even when an appeal lies to the High Court. Then revisional powers can be exercised by the High Court even suo moto, but for review an application has to be made by the agreed party. Review cannot be done suo moto. Then powers of revision and review can be exercised on different grounds. आप grounds जानते हैं, दोनों के grounds different हैं. Then order granting review is appealable, but order passed in exercise of revisional jurisdiction is not appealable. अब writ jurisdiction और revision में क्या अंतर है? Revision jurisdiction can be exercised by the High Court under Section 115 of CPC, while writ jurisdiction can be exercised by the High Court under Article 226 and by the Supreme Court under Article 32 of the Constitution of India. Then, revisional jurisdiction of the High Court is much narrower than the writ jurisdiction. ठीक है? अब under writ jurisdiction, revision की तरह की कौन सी writ होगी? Certiorari. Certiorari would be that writ. Then, if the party has invoked the revisional jurisdiction of the High Court, he cannot thereafter invoke the jurisdiction of the High Court under Article 226 of the Constitution. अभी डिफरेंस दिया गया है, बट आई हैव माई रिजर्वेशंस ऑन दिस पॉइंट. ये जो बात कर रहा है अंडर आर्टिकल 226 रेड विद आर्टिकल 227, जो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस प्राइमरली आर्टिकल 227 में है. ठीक है, मिस प्रिंटिंग हुई है, वहाँ पर 226 लिखा गया है, लेकिन प्राइमरली वो आर्टिकल 227 में जो है पावर रेस्ट करती है सुपरिटेंडेंस की. तो सुपरिटेंडेंस की पावर के कंटेक्स्ट में मैं आपको बता चुका हूँ. अगर एक ही पॉइंट पे आपने एग्जॉस्ट कर दिया रेमेडी, एक ही पॉइंट पे आपने आइदर रेमेडी एग्जॉस्ट कर दी, देन यू कैन नॉट प्रेफर द अदर वन विच यू हैव नॉट एग्जॉस्टेड. ठीक है, सिर्फ इस बात पे बता रहा हूँ. ठीक है, इससे पहले मैंने कई जगह पे बताया होगा कि आप मल्टीपल रेमेडीज़ ले सकते हैं, तो वहाँ पे आप मल्टीपल रेमेडीज़ ले सकते हैं. सिर्फ इसी केस में, रिवीजन के केस में, अगर आपने रिवीजन पहले प्रेफर कर लिया और उस पर एक पॉइंट पर डिसीजन आ गया, सेम पॉइंट को आप उस साइड नहीं चैलेंज कर पाएंगे, क्या कहते हैं, आर्टिकल 227 की साइड पे. ठीक है, याद रखिएगा. लगे यहाँ तो हम लोग बाकी डिफरेंस भी कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील में क्या डिफरेंस है. देखिए, फर्स्ट अपील लाइज फ्रॉम अ डिक्री पास बाय अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. सेकेंड अपील लाइज फ्रॉम अ डिक्री पास बाय द कोर्ट एक्सरसाइजिंग अपैलेट जुरिसडिक्शन. ये आपको पता होगा. फिर अपील लाइज टू अ सुपीरियर कोर्ट विच मे और मे नॉट बी अ हाई कोर्ट, whereas second appeal lies only to the High Court under Section 100. Grounds of first appeal and second appeal are also different. First appeal can filed on the question of fact or of law, or a mixed question of fact and law, while the second appeal can only be filed on substantial question of law. Then, where the amount of decree does not exceed 10,000 rupees, your first appeal is maintainable on the question of law. Refer section 96, subsection 4. While in accordance with section 102 of Civil Procedure Code, a second appeal shall not lie when the subject matter of the original suit is for the recovery of money not exceeding 25,000 rupees. Again, that is also a difference. Then in first appeal, an appellate court has the power to decide issues of fact, but in second appeal, a high court can decide the issue of fact only in certain cases. वो क्या certain cases है? Which falls under section 103 of CPC.
The period of limitation is 30 days in case appeal lies to any other court other than the High Court. Okay? But if it lies to the High Court, then the period of limitation would be 90 days. However, since the second appeal only lies to the High Court, the period of limitation would be 90 days. ठीक है? अब अपील और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है? A right of appeal is a right conferred on the suitor while the power of reference is vested in the court. ये भी ध्यान रखिएगा. कोर्ट रेफरेंस भेजता है. राइट ऑफ अपील आपके ऊपर है, आप अपील करें या ना करें आपके ऊपर है. Reference is always made to the High Court. An appeal can be filed to a superior court which may or may not be a High Court. Then grounds of appeal are wider than grounds of reference. Reference is always made in a pending suit, appeal or execution proceeding, while an appeal can only be filed after decree is passed or an appealable order is made. अब appeal और review में क्या अंतर है? An appeal lies to a superior court while a review lies to the same court. Review of a judgment involves reconsideration of the same subject matter by the same judge, while an appeal is heard by a different judge. Grounds of appeal are wider than the grounds of review. A second appeal lies on the substantial question of law. A second review application, however, does not lie under any circumstances. अब लगे यहाँ जरा रेफरेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि रेफरेंस इतना ज़्यादा आ रहा है. देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, मेजरली शायद सवाल भी इस पे ना पूछा जाए पर फिर भी बता देता हूँ. See, section 113 read with order 46 talk about the reference. ठीक है? It says कि subject to such conditions and limitation as may be prescribed, any court may state a case. देखिए, any court को mark करिए, मतलब कोई भी court may state a case and refer the same for the opinion of the High Court, and the High Court may make such order as it thinks fit. ये यूजुअली रेफरेंस भेजा जाता है व्हेन सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है इट इज़ कंफ्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, या उसे ये नहीं पता है इस चीज़ को कैसे प्रॉपरली डिसाइड करना है, तो वो रेफरेंस भेज सकता है. ठीक है, मान लीजिए दो डिवीजन बेंच हाई कोर्ट की है, उसके कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है. अब जज को समझ में नहीं आ रहा कि इस फैक्ट में किस ओपिनियन को फॉलो करना चाहिए किसको नहीं, वो रेफरेंस भेज सकता है. ठीक है, अब प्रोवाइजो को देखिए, और प्रोवाइजो के ही सेंस में ज़्यादातर लोग बात करेंगे रेफरेंस की. प्रोवाइजो सेज that where the court is satisfied that the case pending before it involves a question as to validity of any act, ordinance or regulation, or of any provision contained in an act, ordinance or regulation, the determination of which is necessary to dispose of the case, and is of the opinion that such act, ordinance or regulation or provision is invalid or inoperative, but has not so been declared by the High Court to which that court is subordinate, or by the Supreme Court, the court shall state a case, setting out its opinion and the reasons thereof, and refer the same for the opinion of the High Court. अब order 46 को देखिए. Refer to rule 1. It says कि किन किन मामलों में reference दिया जाएगा. It says where before or on the hearing of the suit or an appeal in which decree is not subject to appeal, or where the execution of such decree any question of law or usage having force of law arises, on which the court trying the suit or appeal or executing the decree entertains a reasonable doubt, the court may either of its own motion or on application, mark its own motion or on application of any of the parties, draw up a statement of facts of the case and point on which the doubt is entertained, and refers a statement with its own opinion on the point for the decision of the High Court. देखिए रेफरेंस कोड भेजता है, यहाँ पे पार्टीज एप्लीकेशन इस बात के लिए दे सकती हैं कि आप प्लीज़ रेफरेंस भेजिए. ठीक है, रेफरेंस किस सवाल पे जाएगा? जब सवाल हो लॉ का या एनी यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ. ठीक है, तो कोर्ट चाहे तो सुओ मोटो या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज, बट इन आइदर ऑफ द सिचुएशन द रेफरेंस शैल बी सेंड बाय द कोर्ट ओनली. पार्टीज रेफरेंस नहीं भेज सकती. ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इस मेन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा. रूल 1 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसका. अब रूल 2 कहता है कोर्ट में आइदर स्टे द प्रोसीडिंग्स और प्रोसीड विद द केस नॉट विथस्टैंडिंग सच रेफरेंस एंड मे पास अ डिक्री और मेक एन ऑर्डर कंटिजेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द पॉइंट रेफर्ड. मतलब एक कंडीशनल डिक्री ऑर्डर पास कर सकता है. ठीक है, बट प्रोवाइजो क्या कहता है? बट नो डिक्री और ऑर्डर शैल बी एग्जीक्यूटेड
in any case in which such a reference is made until receipt of the copy of the judgment of the high court on such a reference. Execute नहीं होगी, एक conditional decree order pass तो हो सकता है but वो execute नहीं होगा. So the bar is on execution till the reference has been decided by the high court in one way or the other. रूल 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोसीजर की बात करता है. रूल 4 बताता है कौन कॉस्ट बेयर करेगा, तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कौन कॉस्ट बेयर करेगा. अब जो रूल 3-4 हैं, सॉरी वो जो रूल 4A है, रूल 4A बस आपको यही बताता है कि अगर रेफरेंस 113 सेक्शन 113 के अंदर है तो प्रोविजंस ऑफ रूल 3-4 विल अप्लाई. ठीक है, इतनी सी बात करता है. रूल 5 आपको बताता है that when a case is referred to high court under rule 1 or under the proviso to section 113, the high court may return the case for amendment and may alter, cancel or set aside any decree or order which the court making reference has passed or made in the case out of which reference arose and make such order as it thinks fit. तो हाई कोर्ट रेफरेंस के दौरान अगर मान लीजिए कोई कंडीशनल डिग्री पास की गई है तो उसे ऑल्टर, कैंसिल या सेट असाइड कर सकता है. दैट पावर इज विद द हाई कोर्ट. सो रूल 5 उसको रिकॉग्नाइज करता है. रूल 6 और 7 लाइकवाइज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट. यू कैन रीड देम योर सेल्फ. बहुत ही बेसिक प्रोविजंस हैं तो इस पर ज़्यादा एलैबोरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. कंसेप्चुअल पॉइंट उसमें ज़्यादा नहीं है. आपको बस एक कंसेप्चुअल पॉइंट को लेके ध्यान रखना है कि रेफरेंस मीन कहाँ होता है, रूल 1 में ऑफ ऑर्डर 46 और आपका सेक्शन 113. ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आपके हिसाब से, इफ़ यू आर द सबऑर्डिनेट कोर्ट जज और आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टैट्यूट इज सब्जेक्ट टू डाउट and it has not been declared by high court or the supreme court as unconstitutional, and since you are the constitutional expert as well, you in your honest opinion decide that okay, this provision or ordinance or act of the parliament is unconstitutional, so you may give a reference to the high court. ठीक है, अब कौन से हाई कोर्ट का रेफरेंस भेजेंगे, उस हाई कोर्ट को ही रेफरेंस भेजेंगे जिसके आप सबऑर्डिनेट हैं. लेट अस सपोज यू आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड में आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं या आप क्या कहते हैं सिविल जज हैं, तो आप दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं रेफरेंस भेज देंगे, आप रेफरेंस भेजेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट को. ठीक है, और साथ में ये भी देख लेना चाहिए कि जब अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाले पॉइंट पे अगर आपके ओपिनियन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये देख लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अपहेल्ड की है. क्योंकि अगर अपहेल्ड कर दी है और आप उस पॉइंट पे रेफरेंस भेजेंगे तो हाई कोर्ट क्या करेगा, आप इसे कॉस्ट रिकवर करवा लेगा. ठीक है, यू एज अ जज. ऐसा भी हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ था एक बार, उसके बाद से रेफरेंस आना बंद हो गए थे. ऐसे रेफरेंस का प्रोविज़न आपको सीआरपीसी में मिलेगा, सेक्शन 395 ऑफ द सीआरपीसी में. ठीक है, तो रेफरेंस पे कोई ज़्यादा सवाल आता नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए सफिशिएंट रहेगा. इतना ही, ज़्यादा इस पे एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको ज़्यादा सोचना है अपील, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, रिव्यू और रिवीजन, इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाई करनी है. सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट अपील, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है सेकंड अपील, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपका रिव्यू और उसके बाद आपके इम्पोर्टेंस में आता है रिवीजन. रिवीजन और रिव्यू मैं कहूँगा इक्वली इंपॉर्टेंट है, इन पे इक्वली सवाल आ सकते हैं. रेफरेंस पे आई डोंट थिंक कोई पूछता है, लेकिन अगर पूछ लिया तो आप उसका आंसर दे ही देंगे. अब हाँ, एक बात बताना भूलिएगा कि क्या ऑब्जेक्ट है रेफरेंस का, कि रेफरेंस देता ही क्यों है. देखिए, रेफरेंस का सिंपल सा पर्पस इतना सा है कि रेफरेंस इज देयर टू इनेबल द सबऑर्डिनेट कोर्ट to obtain in non-appealable cases the opinion of the High Court in the absence of question of law and thereby avoid commission of an error which could be remedied later on. तो एक्चुअली ऐसी बात है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने आपको डिवीजन बेंच वाला एग्जांपल दिया था, अब उनको समझ में नहीं आ रहा यार किसका व्यू फॉलो करें, गलत व्यू फॉलो कर लिया तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो सकती है, निकाले जा सकते हैं, डिसमिस हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, तो रेफरेंस भेज सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो जाएगी. ठीक है, फिर वैसे ही यूसेज ऑफ लॉ पे भी बात आती है कि यूसेज ऑफ लॉ इस तरीके की इतनी कॉम्प्लेक्स और एंशियंट है कि इस पे क्या कहते हैं, हाई कोर्ट ने कोई ओपिनियन डायरेक्टली नहीं दिया है तो आप रेफरेंस दे सकते हैं. अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाली जो बातें मैंने बताई, जो प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 113 में मैंशनड है, उसमें आप इसलिए दे सकते हैं कि अगर आप जज हैं और आपके सामने कोई ऐसा मैटर आता है जो आप देखते हैं अरे तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, पार्लियामेंट की ये जो एक्ट है इट डायरेक्टली वायलेट्स द फंडामेंटल राइट एंड इट हैज़ बीन सो हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, और उसके बाद आपने रेफरेंस दे दिया.
अब रेफरेंस जो आपने दे दिया तो हाई कोर्ट क्या बोलेगा, रेफरेंस बोलेगा कि भाई ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया है सुप्रीम कोर्ट से, तो आपने वो जजमेंट शायद पढ़ा नहीं ना, यू गिव अस द कॉस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने क्या एक्सप्रेशन यूज़ किया, मैंने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया कि दैट हैज़ बीन सो डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन ने कोई क्वेश्चन है, वो चुपके से बात उसमें रख के चला जाएगा कि ये जो क्वेश्चन था इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और ऐसे में अगर आपने रेफरेंस भेजा तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाले जितने भी पॉइंट होते हैं वेयर द लॉ इज इनवैलिड और इनऑपरेटिव, वहाँ पे द क्वेश्चन शुड नॉट हैव बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। जब उन्होंने डिसाइड नहीं किया है तभी आप रेफरेंस भेज सकते हैं। when the question is already decided and it is merely the question of applying that principle, then the reference cannot be sent. And if you send a reference as a judge, then the cost might be recoverable from you. अब देखिए, एज अ जनरल रूल कॉस्ट ऑफ रेफरेंस जो होता है वो पार्टीज बेयर करती हैं। ठीक है, एज अ जनरल रूल। लेकिन जैसा कि अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एस्टैब्लिश हो गई है, तो आपका रेफरेंस ऑल टुगेदर अनवारंटेड होगा। तब हाई कोर्ट चाहे तो डायरेक्ट द रेफरिंग जस्ट टू पर्सनली पे द कॉस्ट, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बाय द वे ये इतना वो नहीं है, इतना कोई मेजॉरिटी बात नहीं है। मैंने तो आज तक रेफरेंस का को एक्शन में नहीं देखा। नो वन इन द सबऑर्डिनेट जुडिशरी एक्चुअली सेंड्स अ रेफरेंस। ठीक है, और रेफरेंस की जो पावर है एक तरीके से कंसल्टेटिव पावर लगती है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट एक तरीके से अपने पेरेंट हाई कोर्ट से पूछ रहा होता है कि इस केस में क्या प्रॉपरली करना चाहिए। तो एक तरीके से सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर मान लीजिए कोई एरर अवॉइड करना चाहता है या कोई प्रॉब्लम अवॉइड करना चाहता है तो उन पॉइंट्स के लिए वो रेफरेंस बिना किसी दिक्कत के भेज सकता है। ठीक है, बट हाउएवर द ग्राउंड्स फॉर सेंडिंग द रेफरेंस शुड बी वैलिड। ठीक है, जो ग्राउंड मेंशन है ऑर्डर 46 रूल 1 में और सेक्शन 113 में वो सेटिस्फाई होने चाहिए। वो सेटिस्फाई है आप रेफरेंस भेजिए, आइदर ऑन योर ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, दैट इज अप टू यू। लेकिन अगर वो ग्राउंड्स नहीं है, अनवारंटेड रेफरेंस भेजेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बिकॉज इट टैक्सेस द जुडिशियल टाइम ऑफ द कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट। जुडिशियल टाइम जो है हाई कोर्ट का उसको टैक्स करता है। तो ठीक है, आपका रेफरेंस भी हो गया प्राइमरली। रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, रिवीजन इज़ मेन, ज़्यादा कुछ नहीं है। रिवीजन के लिए आज के लिए जितनी भी चीज़ें बताएं दैट वुड बी सफिशिएंट। रिवीजन के बाद अब आई थिंक आपकी सारी अपेलेट जो सुपीरियर जुडिशरी के लेवल पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हो गई हैं। अब हम ज़रा एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो।